Good morning, students. Class 10, second chapter, pair of linear equation, and the next topic is equation reducible to a pair of linear equation in two variable. Now we have given a system of equation, and the equation is not in standard form of the pair of linear equation. So if the system is given 2 by x plus 3 by y is equals to 30, 5 upon x minus 4 upon y is equals to minus 2, then this system can be written as, इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 into 1 upon x plus 3 into 1 upon y is equals to 30, and 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y is equals to minus 2. Now let 1 upon x is equals to p and 1 upon y is equals to q. Then this system will be 2p plus 3q equals to 30, and next 5p minus 4 of q is equals to minus of 2. Now this system is in standard form, that is ax plus by is equals to c, and ax plus by is equals to c. So let us suppose this one, this is a1p plus b1q is equals to c1. This is A2p plus B2q is equals to C2. Then these are the two linear equations in P and Q. Previously, at the place of P and Q, here was x and y. So now these are the two linear equations in P and Q. This is the, let us put, third equation, and this is the fourth. After these are reduced in standard form, now we can solve this pair of linear equation by substitution method, or by the elimination method, or by cross multiplication, whatever it is suitable for you. So if we solve this system by the cross multiplication method, then this 13 will be taken in left side, so minus 13 will be 0. This minus 2 will be taken in left, so plus 2 will be 0. Now we will solve these two equations by cross multiplication. So cross multiplication solve करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे p, फिर लिखेंगे minus q, then लिखेंगे 1. Now p upon is equals to q upon is equals to 1 upon. जब मैं p के नीचे की वैल्यूज निकालूंगा तो p के कोएफिशिएंट को मैं हाइड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 2 से, तो 3 2 जा 6 minus of minus 4 into minus 13, so this will be 52. जब मैं q अपॉन निकालूंगा तो q के कोएफिशिएंट को ऐड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 2 से, तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 5 into minus 13 माइनस ऑफ 65. देन 1 अपॉन लिखूंगा तो कांस्टेंट को ऐड कर दूंगा, तो 2 into minus 4 that is minus 8 minus of 5 into 3 that is 15. So this type by the cross multiplication. So p upon 6 minus 52, ये हो जाएगा आपका minus of 46, minus q upon 4 plus 65 that is 69, and this will be equals to 1 upon minus of 23. So p will be, first को last से compare करेंगे, p बराबर minus 46 upon minus 23 minus minus plus 23 2 जा 46, and q will be equals to minus of 69 upon minus 23 minus minus plus 23 3 जा 69. तो p की वैल्यू आई आपकी 2 and q की वैल्यू आई 3. Now p किसके बराबर था? 1 upon x, तो 1 upon x बराबर 2 implies that x is equals to 1 by 2, and q बराबर था 1 upon y, और y की वैल्यू आ रही है आपकी 3, so y will be equal to 1 upon 3. So these are the
values of x and y. In this way, we can reduce a given equation in standard form of the pair of linear equation, and we can solve for it x and y. Please pause the video and note down. Next question is solve the following system where system is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2 and 6 upon x minus 1 minus of 3 upon y minus 2 is equals to 1. These two equations can be written as first 5 into 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2. Second 6 into 1 upon x minus 1 minus of 3 into 1 upon y minus 2 is equals to 1. Now let 1 upon x minus 1 is equals to p and 1 upon y minus 2 is equals to q. Implies that this will be 5p plus q is minus 2 will be 0. This is the first equation. And second will be 6 of p minus 3 of q minus 1 is equals to 0. This is the first second, then this is third, and this one is fourth. Now these two equations are reduced in standard form of the linear equation into variable p and q, that is a1p plus b1q plus c1 is equals to 0, a2p plus b2q plus c2 is equals to 0. Now using cross multiplication method or substitution or elimination, we can solve the pair of linear equation 3 and 4. So 5p plus q minus 2 is equals to 0 and 6p minus 3q minus of 1 is equals to 0. This is equation number 3 and this is equation number 4. So for cross multiplication, सबसे पहले लिखेंगे p फिर minus of q upon that 1 upon. देखिए यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, p upon minus q upon 1 upon q लिख रहे. देखो p का पोजीशन है पहली लाइन पहला कॉलम, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट प्लस फर्स्ट सेकंड. इसकी पोजीशन जो है ये a p जो है वो 1 1 पोजीशन, पहली लाइन पहले कॉलम है. इन दोनों का सम 1 प्लस 1 2 इवन है तो इसके पहले प्लस आएगा. फिर जो Q जो है ये ध्यान से देखिए, ये पहली लाइन और दूसरे कॉलम में है तो Q की पोजीशन 1 2 है, पहली लाइन दूसरा कॉलम 1 प्लस 2 3 है, ओड है तो ओड के पहले माइनस साइन आएगा. ये ध्यान रखना, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये. नाउ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से p माइनस q 1 लिख करके इसके नीचे जब डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो p के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो p के कोएफिशिएंट को हाइड कर देंगे. पहली लाइन में q के कोएफिशिएंट 1 को इससे 1 into minus 1 that will be minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बीच में लगाना, ब्रैकेट लगाना, फिर दिस कोएफिशिएंट को दिस से, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो minus 3 into minus 2 plus 6. जब q के लिए सॉल्व करेंगे तो q के कोएफिशिएंट को हाइड कर दूंगा तो 5 into minus 1 minus 5 minus of 6 into minus 2 minus 12. जब 1 के लिए निकालूंगा तो 5 into minus 3 minus of 15 minus of 6 into 1 that is equals to 6. So p upon minus 1 minus 6 minus 7 minus q upon minus 5 plus 12. So plus of 7 and q 1 upon minus 15 minus 6 minus of 21. जब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो p बराबर minus 7 upon minus 21. This will be equals to 1 upon 3 and q will be equals to minus 7 upon minus 21. तो minus minus plus that is equals to 1 upon 3. तो p की वैल्यू 1 upon 3 and q की वैल्यू is also 1 upon 3. अब p किसके बराबर है? p was equals to 1 upon x minus 1 is equals to 1 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बराबर x minus 1 implies that x बराबर 3 plus 1 that is 4. And q की वैल्यू आई 1 upon y minus 1 that is 1 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बराबर y minus 1
तो y will be equals to also 4. So x and y both are the 4, 4. This is the solution of this equation first. Sorry, यहाँ y 1 upon y minus 2 था, तो this is y minus 2, so y की value will be equals to your 5. So please pause the video and note down. Exercise 3.6, page number 67 NCERT. In this exercise, especially the given equations are not in standard form of linear equation in two variables. First, we will reduce the given equation in linear equation into variable x and y. Then we will solve it for x and y. So in last video we discussed some example based on the equation reducible to standard form of the linear equation, and today we will do first the most important example, 90 page number 65. The example is that a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and the speed of boat in still water. So first of all, let the speed of boat in still water is equals to x किलोमीटर पर आवर. माना कि जो बोट है पानी में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब जो पानी की धारा है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर. पानी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है. then the resulted speed in downstream means पानी के बहने की डायरेक्शन में अगर बोट की स्पीड x किलोमीटर है और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर है, तो जो रिजल्टेड स्पीड होगी दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर. जब बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और पानी की जो स्पीड है वो ऑलरेडी y किलोमीटर पर आवर है, तो जब पानी के बहने की डायरेक्शन में अगर बोट को अपन रन करेंगे तो रिजल्टेड स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. ऐसे ही the resulted speed in upstream मतलब पानी के बहने की विपरीत डायरेक्शन में अगर अपन बोट को रन करते हैं तो रिजल्टेड स्पीड होगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर. नाउ एज पर गिवन कंडीशन बोट जो है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है. 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का स्पीड है x माइनस 5. सो 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 अपॉन x माइनस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाती है और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है रिजल्टेड x प्लस y है. सो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो 44 किलोमीटर रन करने में कितना टाइम लगेगा? 44 अपॉन x प्लस y, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और 30 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में टोटल टाइम लग रहा है उसको 10 आवर. सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाती है, दैट इज 40 अपॉन x माइनस y,
प्लस और 55 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाती, दैट इज x प्लस वाई। सो 40 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगेगा 40 अपॉन x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा उसको 55 अपॉन x प्लस वाई, और टोटल टाइम लग रहा है उसको 13 आवर। So these two equation will be there. In this way we can form the equation. Now these two equation are not in standard form. So these two equation are reducible form. So what we will consider now? Let 1 upon x minus y is equals to u and 1 upon x plus y is equals to v. इसको अपन इस तरीके से अगर सपोज करके चले तो रिजल्टेड जो इक्वेशन बनेगी आपकी फाइनली these two equation in reducible form will be, so 30u plus 44v minus 10 is equals to 0. Let this is the equation number 3, and 40u plus 55v minus of 13 will be equals to 0. Let this is equation number 4. Now these two equation in variable u and v are in standard form of linear equation in two variable. So now using by cross multiplication method we can solve for u and v. So by the cross multiplication मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कैसे सोल्व करते हैं? u अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1 अपॉन। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले u, यहाँ एक बार फिर से समझा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम। अब जो वेरिएबल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम में है। कॉलम और रो का सम अगर इवन है तो उसके पहले प्लस साइन आएगा। देखिए 1 + 1 2 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ प्लस लिख रहे हैं। v के पहले माइनस क्यों लगाया? क्योंकि v कहाँ आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में जो भी वेरिएबल x एंड y है या u एंड v है, p एंड q है, उनको इस तरीके से लिखेंगे प्लस u माइनस v 1 अपॉन। देखिए 1 के पहले प्लस क्यों लगाया? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो पहली रो तीसरे कॉलम, पहली रो तीसरे 1 + 3 4 इवन है। ये वाला जो v था ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 + 2 3 दैट इज ओड है, सो दैट्स व्हाई ओड पोजीशन पे माइनस लगाएंगे और इवन पोजीशन पे प्लस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? जब मैं u के लिए सॉल्व करूंगा तो u के कोएफिशिएंट को मैं हाइड कर दूंगा 44 * 13, 44 * 13, 13 4 जा 52 कैरी 5, this will be 572. So this is the 572 minus 55 * 10 that is minus 550 is equals to minus v, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा 13 3 जा 390 माइनस ऑफ 40 * 10, तो दिस इज माइनस, ये हो जाएगा प्लस आपका माइनस 390 प्लस ऑफ 400। देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 55 * 3, 55 * 3 5 3 जा 15 कैरी 1 फैक्टर 15 एंड 1 16, तो 1650 माइनस ऑफ देन 40 * 44, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 17 1760। नाउ दिस u अपॉन माय this is 22 and minus of minus 22 and here minus v upon minus 10 and this will be equals to 1650 and 1760 मतलब minus 100 1 upon minus 110. So u will be equals to minus 22 upon minus 10 110 minus minus plus 22 1 ja 22 22 5 ja 100
10. Similarly, minus minus plus, v will be equals to your 10 upon minus 110. 0 से 0 cancel, so minus 1 upon 10. So this time u and v we can solve. So u का वैल्यू आपका 1 upon 5 है and v का वैल्यू जो है that will be this will be plus 10. Okay, so this will be minus minus plus 1 upon 10. Now what is u? U is your x minus y. So x minus y is equals to 1 upon x minus y is equals to u, and u is 1 upon 5, implies that x minus y is equals to 5, first equation, and second 1 upon x plus y is equals to 1 upon 11. 1 upon 11. So this is 1 upon 11, implies that x plus y will be equals to 11. So again we have to solve these two equations. So on adding, minus y plus y will be cancelled. 2x is equals to 5 and 11 16. So x will be equals to 8. X की वैल्यू यहाँ 8 पुट अप कर दिए, तो 8 minus y is equals to 5. So 8 minus 5 is equals to y, implies that y is equals to 3. So the speed of boat in still water is 8 km per hour and speed of the stream is 3 km per hour. So this is the most important question exam point of view. So please pause the video and note down. Now we will solve the question of NCERT exercise 3.6. The first question is solve the following pair of linear equation by reducing them to a pair of linear equation. Question number first is 1 upon 2 into x plus 1 upon 3 into y is equals to 2, and second is 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equals to 13 upon 6. These are the two equations and which are not in standard form. So first we will reduce in the standard form because these are the two reducible equations. So let's say 1 upon x is equals to p and 1 upon y is equals to q. Implies that first equation बन जाएगा आपका p upon 2 plus q upon 3 is equals to 2 upon 1. LCM 2 और 3 का 6 होगा. So this 6 से 3p plus 2q is equals to 2 upon 1, cross multiply करेंगे तो 3p plus 2q will be equals to 12, and this is the equation number 3. Similarly, second equation को p upon 3 plus q upon 2 is equals to 13 upon 6. Again इन दोनों स्टेप का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ 6 एलसीएम लेंगे. 3 2 जा 6, 2p plus 3q is equals to 13 upon 6. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. 2p plus 3q equals to 13. This is, let us suppose, equation number 4. Now on solving इक्वेशन नंबर 3 and 4 कैसे सोल्व कर सकते हैं इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में. 3p plus 2q minus 12 is equals to 0 first, and 2p plus 3q minus 13 is equals to 0 second equation. Using cross multiplication method we can solve now. So p upon minus q upon and constant 1 upon. जब p के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, q के कोएफिशिएंट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -13 से -26. इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसको आप ऐसे लिखना, माइनस साइन लगाना, फिर ब्रैकेट में 3 into -12 दैट इज -36. देन q के लिए वैल्यू निकालेंगे तो q के कोएफिशिएंट को हाइड कर दूंगा. 3 into -13 तो ये -39 minus of 2 into 12 तो -24, minus of -24. then 1 के लिए निकालेंगे 3 3 जा 9 -4, 9 -4.
So finally P upon minus 26 plus 36, that is plus of 10, minus Q upon minus 39 plus 24, minus 39 plus 24, 9 plus 6, minus of 15 and 1 upon 5. फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करेंगे, P upon 10 is equals to 1 upon 5, imply that P is equals to 10 upon 5, that is 2, and second को लास्ट से माइनस माइनस प्लस, Q is equals to 15 upon 5, तो Q will be equals to 3. P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितनी है? 3 है. नाउ हमने P को क्या सपोज किया था? P को लिया था अपन ने 1 upon x. So 1 upon x is equals to 2, implies that x is equals to 1 by 2, and 1 upon y is equals to q. q कितना है आपका 3, implies that y is equals to 1 upon 3. So these are the two values of x and y. X is equals to 1 by 2 and y is equals to 1 by 3. So in this way, when the equation are not in standard form, or we can say if they are in reducible form, then we can first reduce in the standard form, and if they are in standard form, then using substitution method, elimination method, cross multiplication, whatever method which is perfectness for you, you can solve. जैसे हमने यहाँ by cross multiplication method यूज लिया, आप substitution method भी यूज ले सकते हैं, elimination method भी यूज ले सकते हैं, subject to आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं कर रखा है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि रिड्यूस दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूज एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज लेना. अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. Now let us take second question. Question number second. First का second part, 2 upon root x plus 3 upon root y is equals to 2. 4 upon root x minus 9 upon root y is equals to minus 1. क्या करेंगे? These equations are not in standard form. Let 1 upon root x is equals to p and 1 upon root y is equals to q. So 2p plus 3q is minus 2 बराबर 0. Let us put equation number 3 and 1 upon root x को p मानूंगा, तो 4p minus 9q plus of 1 is equals to 0. This is equation number 4. Now by cross multiplication method, p upon is equals to minus q upon is equals to 1 upon. जब p के लिए सोल्व करेंगे तो p के कोएफिशिएंट को हाइड करना, 3 into 1 that is 3 minus of minus 9 into minus 2, तो ये plus of 18 हो जाएगा. Then q के लिए सोल्व करेंगे तो 2 into 1 that is 2 minus of 4 into minus 2 minus of 8. 1 के लिए सोल्व करेंगे तो 2 into minus 9 minus of 18 minus of 4 into 3 that is 12. So finally आपके पास आया p upon 3 minus 18 that is minus 15 is equals to minus q upon 2 plus 8 that is 10 is equals to 1 upon minus 18 minus 12 that is minus of 30. So first and last को कंपेयर करेंगे तो p is equals to minus 15 upon minus 30 that is 1 upon 2, and second और last को कंपेयर करेंगे तो q will be equals to minus 10 upon minus 30 that is 1 upon 3. Now what was p? p was 1 upon root x, implies that 1 upon root x किसके बराबर है? 1 upon 2, implies that root x is equals to 2, squaring both sides implies that x is equals to 4, and 1 upon root y is equals to 1 upon 3 implies that y is equals to 9. So these are the values of x and y.
So in this way, we can reduce in the standard form, and using any method, we can find the value of x and y. Pause the video and note down. Then question number 3. 4 upon x plus 3y is equals to 14, and 3 upon x minus 4y is equals to 23. So here let the 1 upon x is equals to p. Okay, new variable मान लिया. So 4p plus 3y minus 14 is equals to 0 is the first standard form, and 3p minus 4y is minus 23 is equals to 0 is the second. Now using any one method we can solve. So let us suppose by cross multiplication method. By cross multiplication method से हम क्या करेंगे? p upon is equals to minus y upon is equals to constant 1 upon. जब p के लिए वैल्यू निकालेंगे तो p के कोएफिशिएंट को ऐड करना. 23 minus 23 into 3, that is minus of 69 minus of minus 4 into 4, so it will be plus of 56. Then y के लिए निकालेंगे तो 4 into, so it will be minus of 92 minus of 3 into minus 42 minus of 42, और 1 के लिए निकालेंगे 4 4 जा 16, तो minus 16 minus 9 minus 16 minus 9. So finally p upon 9 and 6, it will be 69, 56. 9 and 6, it will be 15 ka 5, carry 1, 6 and 11 and 12. Minus 125 is equals to minus y upon 92 plus 42. 92 plus 4, minus 92 plus 42, that is minus of 50, and it will be 1 upon minus 25. So first को last से compare करेंगे, p will be minus 125 upon minus 25, minus minus plus, so p will be 5, and y will be equals to minus minus plus, so y will be equals to 50 upon minus 25, that is minus of 2. Now y की वैल्यू -2 है, p किसके बराबर था? 1 upon x, implies that 1 upon x is equals to 5, implies that x will be equals to 1 upon 5. So in this way we can reduce the given equation in standard form, and using any method we can solve the 4 variable x and y. So hope you like this video. Please like it, share it, subscribe it. Thank you.